Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Economics. This is class 10th, chapter 3 Money and Credit. So, till now, we have studied about the barter exchange, that how initially we exchange the goods without the use of money. Then we talk about the money, the modern form of money is accepted by all as a medium of exchange because the Indian government authorized it. Okay, and in modern form of money we have the paper money, the coins, and the plastic money. Plastic money means all the cards we are using like ATM, Paytm, and the debit cards and the credit cards. Okay, then we talk about the banks, that how bank accept the deposits and provide loans. Then we discuss about the process behind the work, the behind the loan. We discuss about the process behind the loan, that how bank provide loan and what are the terms of credits. In terms of credit, we know about some, we discuss about some credits which we should keep in our mind whenever we are going to take a loan or whenever we are going to provide loan to someone else. Okay, so in today's lecture we discuss about the credit arrangements. We discuss that how different peoples fulfill their loans need and what are the different sources are there from where they can fulfill their needs. They can finance their business, they can finance their dreams or fulfill their basic needs. Okay, so I included two pictures here from your textbook, so go throughout it and read the stories. And the essence is here in these two pages. These two pages will help to know that how various people depends on various source of the credit. So let's talk about the landless laborers. Landless laborers, they don't have land to cultivate. Okay, so they are depend on others for the livelihood. They have only one option, they work as a laborer in others field. Okay, that's why they totally depend on the employers for the loan requirements. Okay, but the employer charge a high interest rate, plus they put some conditions there. Conditions can be like you have to work you have to work on a particular rate on my fields, and your wife have to work in my house as a housemaid. Okay, and some others many more. Okay, but the consequences are there because the interest rate is high and they don't have work to do. Actually, landless laborers have only 5 or 7 months in a year which they have work. Okay, they have work in harvesting period only. Okay, and the rest of the time they spend this time to searching the work. So that's why the interest, they can't repay the loan. That's why they call in they trapped in they caused in debt trap. Okay, and you all know about the debt trap. And then let's talk about the small farmers. Small farmers have a small piece of land. They cultivate the land, or for the renovation, for the innovation, or some working capital. They need money, like they need seeds and the tools, machines for the cultivation. Okay, so for increase the production, they need some tools. Okay, so for this they totally depend on traders. Why on traders? Because they took seeds and they fulfill their needs like seed and the tools and the machines from the traders. That's why they have only one option. Okay, here they took loan from traders, and traders charge a high interest rate.
Plus there is a condition that you have to sell your crop to me. Here traders quote a very low rate of the crops, so here the farmers have to bear the loss. Okay, so this is the consequences of this. Next is medium landowners. Medium landowners means they have a piece of land, quite a uh, okay piece of land. Okay, so they are well educated, that's why, and are very much aware, that's why they took a loan from the bank. And we discussed about it earlier that how bank works, and the bank's terms of credit are very transparent. Okay, and they charge a low interest, so they easily repay the loan amount plus the interest amount. Next is loans from cooperative. Cooperative is a machinery which works on the belief of on the moral of that one is for all and all is for one. Means here is a group of peoples, they collect their resources and transfer it to the needed one. Okay, and after a particular time the interest rates are low, so he can or she can easily repay the loans. Plus if they need a huge amount of loans, then they use this collected amount as a collateral for the to raise funds from the bank. Okay, so we all see here the various sources of loans, like employers, the traders, the bank, and the cooperative societies in four options, from which you are going from these fours, which one you like, and which one you consider as the best source of credit. Of course the bank. Why? Because bank have the very transparent process and the easy terms of credits. And rest of bank, the employer and traders suck the blood of the borrower. And charge high interest, and some illegal conditions are there. Okay, so now let's talk about the credit arrangements, the sectors of credit arrangements. Okay, there are only two sectors of credit arrangement. One is formal and second is informal. Formal we have banks and cooperatives, and in informal sector of loans we have money lenders, traders, and the relative and friends. Okay, so let's talk about one by one about it. The formal sector credit in India, cheap and affordable source of the loan is formal sector. Okay, and like in formal sector loans, there are these are the loans from banks and cooperatives. Okay, the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal source of loan. Banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. Okay, so formal sector of loans जो होता है उसमें बैंक और cooperatives आते हैं. Plus banks, we know that Reserve Bank of India is the father of all banks. So पप्पा बैंक को सारी informations जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ती हैं. वो इसलिए डिपॉजिट करवानी पड़ती है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो मनी मेकिंग कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को ना दिया जाए. बाकी जो मैंगो पीपल्स हैं, जिनको जो आम लोग हैं,
उनको भी लोन जो है वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो वो ये चेक करता है कि उन्होंने किसे लोन दिया है, कितना लोन दिया है और किस इंटरेस्ट रेट के साथ दिया है। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर्स जो है, जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है और हमारे अब्यूज़ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर अब्यूजमेंट ऑफ द बोरोवर. Then next is benefits. So there are some benefits are there that if the RBI control all these things or control the loans, and the interest rates are very low and the terms are very fixed. Okay, so there is no exploitation by the lender. Okay, and everyone can take a loan from the includes big businessmen as well as the small cultivators or borrowers. As I told you later, as I told you that RBI ये इंश्योर करता है, ये श्योर करता है कि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन्स को ही नहीं दिया जाए लोन, बाकी जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, जो अपना छोटा छोटा बिजनेस चला रहे हैं, उनको भी लोन दे के प्रमोट किया जाए, उनकी भी जो जो उनकी डिज़ायर्स है उनको फुलफ़िल किया जाए, उनकी भी जो ड्रीम्स है उनको फिनेंस किया जाए. ओके, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ यूजुअली लेस. वाई? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज़ लो. Then let's talk about the informal sector loans. These are the loans from money lenders, traders, employers, relatives, and friends, etc. There is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. कोई उनको supervise करने के लिए नहीं होता है. अब supervise करने के लिए नहीं होता है, then उसके consequences होंगे और वो borrower को ही bear करने होंगे. So there is no one to stop them from using unfair mean to get their money back. Okay. सॉरी, ऐसा कोई भी रेगुलेटिंग एजेंसी या कोई कुछ ऐसी बॉडी नहीं होती है जो कि ये डिसाइड कर सके, जो उन्हें रोक सके, जो उन्हें कंट्रोल कर सके, ताकि वो अनफेयर कंडीशंस जो है वो ना लगाएं और बोरोवर्स को एक्सप्लॉइट ना करें. सो लेट्स टॉक अबाउट सम बैकड्रॉज ऑफ दिस. Most of the informal lenders charge a much higher interest on loans, thus the cost to the borrower of the informal loan is much higher. We all know that how the employer and the traders charge from small farmers and from landless laborers. Higher cost of borrowing means a large part of earning of the borrowers is used to repay the loan. High cost का मतलब ज़्यादा interest rate अगर आप charge कर रहे हो, it means लोन का एक जो, जैसे सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है या एक छोटा फार्मर है, उसने क्या किया, 50,000 का लोन ले लिया है. ओके, या 10,000 का लोन लिया, छोटा से एग्जांपल लेते हैं, 10,000 का लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 5%. तो अब देखिए उसको कितने रुपीज़ पे करने होंगे, उसको 10,500 रुपीज़ पे करने होंगे और इतना वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है. बट अगर यही मैं बात करूं कि ये जो इंटरेस्ट है वो 15% के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तब जो उसकी अर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन को रीपे करने में ही उसका यूज़ हो जाएगा. ओके, तो और उसके बाद क्या होगा, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा. इतनी अर्निंग होना ज़रूरी तो नहीं है ना. ओके, सो दे हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर नाउ कि जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो जो अर्निंग होती है बोरोवर की, उसने जहाँ पैसा लगाया है, जहाँ फिनेंस किया है, उससे जो अर्निंग हो रही है उसका एक बहुत बड़ा ह्यूज पार्ट जो है वो लोन को रीपे करने में ही लग जाता है. तो उसके पास उसके खुद के प्रॉफिट के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं है एंड अगेन उसे फिर से लोन लेना पड़ता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो ये साइकिल चलने लग जाता है. थस दे कॉज्ड इन डेब्ट ट्रैप. तो साइकिल में ही ये डेब्ट ट्रैप आ गया. ओके, so I hope the formal and informal sectors of loans are clear now. So now let's talk about the self-help groups. There are some self-help groups where people collect and help each other. Okay, so let's see how it works. Self-help groups for the poor. Poor householders are
still depend on informal sources of credit because of the following reasons. जो पुअर हाउस होल्डर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं. क्यों डिपेंड करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट. बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में हर जगह बैंक नहीं है, एक तो ये रीज़न है. इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स पीपल प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल. ओके, फर्स्ट एक तो बैंक नहीं है, ओके, लोग इतने अवेयर नहीं हैं. सेकंड, अगर बैंक है भी तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है. दैट्स वाई फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक they have to deposit the proper documents and the collateral. We talk about the documentation and collateral earlier. Okay, so वो एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने ग्रुप्स बना लेते हैं जिनको हम शॉर्ट में SHGs भी कहते हैं. SHG are small group of poor people which promote small savings among their members. तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं. ओके, a typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. ओके, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ 15 से 20 लोग होते हैं यूजुअली, जो कि मिलके क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं और जब भी उनमें से किसी को इसकी ज़रूरत होती है तो वो उसको प्रोवाइड करवा देते हैं. ओके, इसके एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल. अब देखिए, अब छोटे छोटे लोग हैं, मीन्स नॉर्मल लोग हैं. नॉर्मल इन द सेंस कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो उनके पास कोलेट्रल नहीं होगा तो उनकी लोन्स कैसे मिलेगा उन्हें बैंक से. तो इसलिए क्या होता है, जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता है ना, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ SHGs. Okay, people can get timely loans for a वैराइटी ऑफ पर्पजेज एंड एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. सही है, उसके पास उनको ईजीली लोन मिल जाता है ऑन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुअर ऑफ द रूरल पुअर्स. अब देखो, जो गरीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं, ओके, तो वो कहाँ से अपने फिनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करेंगे? तो उसके लिए ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है उनकी छोटी छोटी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी छोटी छोटी नीड्स को फिनेंस करने के लिए. इट हेल्प्स वुमेन्स टू बिकम फिनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट. ओके, अब देखो, आपने भी सुना होगा, आपने वर्ड सुना होगा किटी पार्टी. किटी पार्टी में क्या होता है, औरतें मिलती है, एंजॉय करती हैं, एंटरटेनमेंट करती हैं, प्लस वो क्या करती है, अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती हैं. तो इससे क्या होता है, जो वुमेंस हैं, ओके, वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं. अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ औरतें हैं जो आसपास में काम करती हैं घरों में, या हाथ कढ़ाई, वो पेपर जैसे पापड़ बनाने का काम करती हैं, अचार वगैरह डालती हैं. ओके, तो वो क्या करती हैं, फिर अपनी जो मनी होती है ना, उसे कलेक्ट कर लेती हैं और बैंक में डिपॉजिट करवा देती हैं. और फिर जब उन मेंबर्स में से किसी को भी ज़रूरत होती है घर पर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो उस मनी का यूज़ करती हैं. तो यहाँ फेथ भी होता है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो ईजिली लोन रीपे हो जाता है. मीन्स हम अपनी प्रॉब्लम को अपने सोर्सेज से फुलफिल कर रहे हैं. वी आर नॉट डिपेंड्स ऑन समवन एल्स. ओके, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑन द वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा. अब वही है, बहुत से लोग आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे तो वो अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे. डे टू डे लाइफ में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके आसपास क्या चल रहा है, घर में हेल्थ सिचुएशंस कैसी है, बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कैसा न्यूट्रिशन फूड वो प्रोवाइड करवा पा रही हैं. तो इस बारे में वो डिस्कस करती है. तो पता ही, हम जब भी जो चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है अलग अलग चीज़ों का. ओके, so in today's lecture we discussed about the formal and informal sectors of bank, the various credit arrangements, the various sources, and then SHGs. Okay, so your home assignment is prepare notes and answer the following. You have to prepare the notes and plus answer the following questions. There are only 3 questions. What are the variety of credit arrangements? What are the sectors of credit arrangement? And explain SHGs in your words simply. Okay, so I hope this lecture is clear to you all. That's it for today. Good luck. Bye bye.